हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू यू ऑल अगेन टू दिस प्लेटफॉर्म। और हम लोग के दूसरे सेशन में स्वागत है। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आगे का मूव कोल्ड का, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग 5 मिनट में डिस्कस करेंगे क्लैरिडा स्पीक भी। सो डिस्कस करने से पहले और कुछ बताने से पहले एक बार क्लियर कर दे, आप लोग को आवाज़ क्लियर आ रही है और स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल हो रही है? तो काइंडली प्रेस 14 इन द चैट बॉक्स ताकि हम लोग सेशन स्टार्ट कर सकें। 1763.5455 के लेवल्स। ओके, सो देख सकते हैं गोल्ड का मूव अगर हम लोग देख ले तो 1763 के लेवल्स पे फिलहाल मूव करते हुए देखने को मिल रहा है। और वनडे कैंडल का मूव देखे तो वनडे कैंडल थोड़ी सी स्लाइड डाउन होती हुई दिख रही है, क्योंकि आज की जो अपना हाई बनाया है 1769 के आसपास बनाया है, 50.56 तक का लो बनाया हुआ था। फिलहाल 63 के लेवल्स पे मूव करते हुए एक शॉर्ट हम लोग को देखने को मिली है इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन 15 मिनट कैंडल स्टिक में। 3 मिनट बाद इस कैंडल की भी क्लोजिंग का टाइम है, देखेंगे इस कैंडल की क्लोजिंग कैसी है। और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे अपने क्लैरिडा स्पीक पे और देखेंगे उस स्पीक के रिजल्ट्स कैसे देखने को मिल रहे हैं। देख सकते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग का टाइम और दूसरी 15 मिनट कैंडल की ओपनिंग का टाइम होते हुए 1763.1617 के लेवल्स। सेवनटीन 63.1516। और हम लोग आ जाते हैं एक बार अपने फॉरेक्स फैक्ट्री डेटा पे। रिफ्रेश करते हैं और आ जाते हैं ट्यूसडे की मीटिंग, जो कि है हमारी एफओएमसी मेंबर क्लैरिडा स्पीक। ओके, सो यहाँ पे हम लोग को नहीं देखने को मिल रहा, हम लोग आ जाते हैं अपने यूट्यूब पे फाइंड करने, लाइव होते हुए देखने को मिलेगा। सो हम लोग देख रहे हैं क्लैरिडा स्पीक।
Think about it. What is the new equation? It's a new way to look at the world. Unexpected combinations of people and technology solving more together than they ever could alone. During his youth, Thiel attended Stanford University majoring in philosophy. His Stanford experience shaped a really big part of who he decided to surround himself with. That's Lizette Chapman. And I cover technology and venture capital here at Bloomberg. He and his Stanford friends made their first big splash in tech with PayPal. After selling to eBay for $1.5 billion, they would become known as the PayPal Mafia for each incredible success after PayPal. For Thiel, that began with an early, modest $500,000 investment in Facebook. And in VC speak, early means big risk, but also big reward. He turned that initial $500,000 investment into more than $1 billion in cash. But Thiel was just getting started with Facebook, and he went on to make a whole bunch of wildly successful investments. From SpaceX to Airbnb to Hello, everyone, and welcome back to the Peterson Institute for International Economics. I'm Adam Posen, the Institute's president, and it's our privilege today to host a speech and then on-the-record discussion with the Vice Chair of the Federal Board of Governors, the Board of Governors of the Federal Reserve System, the Honorable Richard H. Clarida. We will be turning this over in a moment to Dr. Clarida for an opening speech. The speech is now posted on the Fed and the PIIU websites. And of course, this entire program is being streamed live and will be available on the PIIU website and in other public places from the moment it's finished. Richard Clarida, we should remember, began his four-year term as Vice Chair of the Board of Governors on September 17th, 2018. In so doing, he took office as a board member to fill an unexpired term, which ends in January 31st, 2022. Prior to his appointment at the board, Dr. Clarida served as the C. Lowell Harris Professor of Economics and International Affairs at Columbia University, where he taught from 1988 to 2018. Many of my colleagues at Peterson either studied with or had the privilege to work with Dr. Clarida. He included in that time a period as chairman of the Department of Economics at Columbia and also as an advisor to the Federal Reserve Bank of New York, and authored many important works on monetary policy and monetary economics. In addition to his academic experience, Dr. Clarida served as the Assistant Secretary of the U.S. Department of the Treasury for Economic Policy, effectively the Chief Economist of the U.S. Treasury, from February 2002 to May 2003, and thereby was Chief Economic Advisor to Treasury Secretaries Paul O'Neill and John Snow, a distinction he shared at the time of working with Jay Powell and Randall Quarles, I believe, also, who've now joined him at the Fed. Rich was awarded the Treasury Medal in recognition of his service. Earlier, Dr. Clarida served on the Council of Economic Advisors under President Reagan. Though it's not a focus today, I should mention that Rich is a triple threat. He's not only excelled in academia and in public economic service, but for many years in the markets at PIMCO. Rich is a member of the Council on Foreign Relations and was a member of the National Bureau of Economic Research until taking his current office. From 2004 to 2018, he served as co-editor of the NBER International Macroeconomics Annual. Mark of how high esteem he was held globally by his colleagues. Dr. Clarida received his BS in economics from the University of Illinois and his MA and PhD in economics from Harvard University. Rich, it was our privilege to have you 11 months ago when you came over to the Peterson Institute to explain the new strategic framework. And now we're looking to you to explain the economic outlook and the prospects for U.S. monetary policy. Adam, thank you so much. Always enjoy my opportunities, both live and virtually at Peterson. With the release of the GDP data last week, we learned that the US economy in the second quarter of this year transitioned from recovery to expansion. Given the catastrophic collapse in activity in the first half of 2020 as the result of the
pandemic and efforts put in place to contain it, few forecasters, certainly not me, could have expected or dared to hope in the spring of last year that the recovery in GDP from the sharpest decline since the Depression would be either so robust or as rapid. In retrospect, it seems clear that timely and targeted monetary and fiscal policy actions, unprecedented in both scale and scope, provided essential and significant support to the economic recovery as it got underway last year. Indeed, just recently, the NBER determined that the recession that began in March of last year ended in April, making it not only the deepest recession on record, but also the briefest. Moreover, with the development and distribution of remarkably effective vaccines, the monetary and fiscal policies presently in place should continue to support the strong expansion and activity that is expected to be realized this year. Although obviously the rapid spread of the Delta variant among the fraction of the population unvaccinated is clearly a downside risk for the outlook. That said, under the latest CBO baseline forecast, the economy by the end of 2021 will have entirely closed the output gap opened up by the recession. If so, this would be the most rapid return following a recession to the trend level of real GDP in 50 years. Importantly, while it is customary in business cycle analysis to date the transition from recovery to expansion, according to the calendar quarter in which the level of real GDP first exceeds the prior peak, in past US business cycles, the recovery in employment has always lagged the recovery in GDP, and this cycle is no exception. Indeed, at the end of the second quarter of this year, even though the level of GDP, real GDP, was about 1% above the prior peak, the level of employment as measured by the household survey remains around 7 million below the level reached in the previous business cycle peak. So while it is accurate to say that we are in the expansion phase of the economic cycle in terms of economic activity, we certainly remain in the recovery phase in terms of aggregate employment. In June, the Federal Reserve released its most recent summary of economic projections, the unemployment rate, inflation, and the federal funds rate. Now, the SEP provides summary information about the empirical distribution of individual modal projections at the time of the FOMC meeting submitted by each participant. Each individual submits projections for the modal or the most likely outcome for each variable under his or her assessment of appropriate monetary policy. Of course, if a participant's subjective distribution for outcomes are symmetric and unimodal, then the mode of that distribution will equal the mean. But in general, there is no presumption that subjective distributions, or for that matter, empirical distributions, are symmetric. Indeed, an important addition to the SEP introduced in December is a set of charts showing the historical evolution of indexes for the assessment of the balance of risk to the SEP projected variables. In the June SEP round, my individual projections for GDP growth and unemployment turned out to be quite close to the path of the SEP medians for each of these variables over the projection window. Under the median of modes outlook in the SEP, GDP growth this year is projected to be 7% on a Q4 over Q4 basis, which if realized would represent the fastest 4 quarters of GDP growth since the 1980s. Under the projections, GDP growth does step down to 3.3% next year and 2.4% in 2023, but to a pace that still exceeds the projected pace of long-run trend growth. Not surprisingly, the projected path of robust GDP growth translates into rapid declines in the projected path of the unemployment rate, which is projected to fall to 4.5% by the end of this year, 3.8% by the end of 2022, and 3.5% by the end of 2023. This projection for the path of the unemployment rate is, according to the Atlanta Fed jobs calculator, consistent with a rebound in labor force participation to its estimated demographic trend, and is also consistent with cumulative employment gains this year and next that by the end of 2022 eliminate the employment gap relative to the previous business cycle peak.
As is the case for GDP growth and unemployment, my projections for inflation are also similar to the past of the SEP medium modal projections. Under the SEP path for inflation, core inflation surges to at least 3% this year before reverting back to 2.1% for the next 2 years. Thus, the modal baseline outlook for inflation over the projection window reflects the judgment shared with many outside forecasters that most of the inflation overshoot relative to the longer run goal of 2% will in the end prove to be transitory. But as I have noted before, there is no doubt that it is taking longer to fully reopen a $20 trillion economy than it did to shut it down. Although in a number of sectors of the economy, the imbalances between demand and supply are substantial, I do continue to judge that these imbalances are likely to dissipate over time as the labor market and global supply chains adjust, and importantly, do so without putting persistent upward pressure on price inflation, wage gains adjusted for productivity, and the 2% inflation objective. But let me be clear on 2 points. First, if as projected, core PC inflation this year does come in at or certainly above 3%, I will consider that much more than a moderate overshoot of our 2% longer run goal. Second, as always, there are risks to any outlook, and I do believe that the risks to my outlook for inflation are to the upside. In September of 2020, the FOMC announced, and since then has reaffirmed, outcome-based threshold guidance that specifies 3 conditions the committee expects will be met before it considers increasing the target range for the federal funds rate. This guidance in September of last year brought the forward guidance in the statement into alignment with our new policy framework. To quote from the statement, these conditions are that, quote, labor market conditions have reached levels consistent with the committee's assessment of maximum employment, and inflation has risen to 2% and is on track to moderately exceed 2% for some time. Now, while as Chair Powell indicated last week, we are clearly a ways away from considering raising interest rates, and this is certainly not something on the radar screen right now. If the outlook for inflation and outlook for unemployment I summarized earlier turn out to be the actual outcomes for inflation and unemployment realized over the forecast horizon, then I do believe that these 3 necessary conditions for raising the target range for the funds rate will have been met by year-end 2022. Core PC inflation since February of 2020, a calculation window that smooths out any base effects resulting from round-trip declines and rebounds in prices in COVID-sensitive sectors, and coincidentally also measures the average rate of inflation since hitting the effective lower bound, is running at 2.7% through June of this year and is projected to remain above 2% in all 3 years of the projection window. Moreover, my inflation projection for 2022 and 2023, which forecasts somewhat higher inflation than do the SEP medians, would also, to me, satisfy the, quote, on track to moderately exceed 2% for some time threshold. Finally, while my assessment of maximum employment incorporates a wide range of indicators to assess the state of the labor market, the employment data I look at, such as the Kansas City Fed's labor market conditions indicators, are historically highly correlated with the unemployment rate. My expectation today is that the labor market by the end of 2022 will have reached my assessment of maximum employment if the unemployment rate has declined by then to the SEP median projection of 3.8%. Now, given this outlook, and so long as inflation expectations remain well anchored at the 2% longer run goal, commencing policy normalization in 2023, if these outcomes are realized, would under these conditions be entirely consistent with our new flexible average and targeting framework. I note that under the SEP median of modal projections, annualized PCE inflation since the new framework was adopted is projected to be 2.6% through year-end 2022 and 2.5% through year-end 2023. In the context of our new framework, it is important to note that while the ELB can be a constraint on monetary policy, the ELB is not a constraint on fiscal policy.
An appropriate monetary policy under our new framework, to me, must and certainly can incorporate this reality. Indeed, under present circumstances, I judge that the support to aggregate demand from fiscal policy, including the more than $2 trillion in accumulated excess saving accruing from as yet unspent transfer payments, in tandem with appropriate monetary policy, can fully offset the constraint that the ELB imposes on the ability of an inflation targeting monetary policy acting on its own to restore maximum employment and price stability while keeping inflation expectations well anchored at the 2% longer run goal. Before I conclude, let me say a few words about our Treasury and MBS purchase programs. In our December statement, we indicated and have reaffirmed since that we will maintain the pace of Treasury and MBS purchases at $80 billion and $40 billion per month, respectively, until substantial further progress has been made towards our maximum employment and price stability goals. Since then, the economy has made progress towards these goals. And at our meeting last week, the committee reviewed some considerations around how our purchases might be adjusted, including their pace and composition, once economic conditions warrant a change. Participants expect that the economy will continue to move towards our standard of substantial further progress. In coming meetings, the committee will again assess the economy's progress towards our goals. And as we have said, we will provide advance notice before making any changes to our purchases. Now, let me emphasize that the outlook I have described in these remarks is, of course, only one of many possible paths that the economy may take. I began by noting that the recovery to date has been surprising, and it is plausible, indeed probable, that more surprises are in store. The economic outlook is always uncertain, both because new shocks arrive and because our knowledge of the workings of the economy is imperfect. Additionally, the recovery and expansion following the pandemic are unlike any we have ever seen, as I noted in the introduction, and it will serve us well to remain humble in predicting the future. I certainly am. In light of these uncertainties, the committee, as always, will be basing its judgment on outcomes, not just the outlook. And looking ahead, our policy decisions will continue to depend on the data, along with their implications for the outlook and associated risk to the outlook. Thank you very much for your time and attention. And as always, I look forward to my conversation with Adam. Thank you. Thank you very much, Rich. Obviously, you're making a lot of strong, clear statements in your speech. I want to start our discussion, which is on the record, obviously, in a different place. To me and to many people, the biggest strangeness of recent months has been the continuing decline of U.S. long bond rates, the 10-year going down to below 1.2. The FOMC's own estimates of R-star neutral rate are well below 2 and going down. The five-year real forward is negative. Notwithstanding whatever market reaction to your remarks today, this is a very striking trend when there seem to be many things pushing up inflation and when there is a prospect of the Fed raising rates. What is going on? Is it secular stagnation worse than we thought? Is it something technical? What does it matter that it's global and doesn't seem to be Fed specific? How do you think about the long bond and R-star estimates at this point? Well, Adam, not surprisingly, you teed that up very well, because I think each of those is an element. Now, let me say at the outset, I have been surprised, certainly by the magnitude of the decline in bond yields. Interestingly enough, it doesn't appear to be driven by a move shift downward in expected inflation. That's noisy, but those measures, whether or not you look at tips or surveys or other indicators, have not changed all that much. So as you indicated correctly, it has been a move in real yields, and it's been a global move in real yields, and the move is quite pronounced. So for example, in March, the five-year real tips yield was about 0.6% positive, and now it's about minus 0.4% negative. So that's a big move in real yields. I think it is global. I think in part it probably does reflect
some concerns about the virus that are maybe more prevalent now than they would have been in the spring. I'm watching it closely. Forecasting is hard. Usually 2020 hindsight's pretty accurate, but even with this case, I'm still analyzing it. So I think the decline in real rates, obviously, secular stagnation was a very popular, persuasive theory for a number of years. I think it's too soon for me to embrace that as the sole explanation, but there are a lot of things going on, and I'm looking at them closely. Thank you. Bridging that discussion back to some of the things you addressed in your speech, let's talk for a moment about flexible average inflation targeting, the new framework that Chair Powell and you and others advanced a year ago with the support of the committee. One issue with flexible average inflation targeting is the credibility of the commitment to make up for past undershoots. In your speech, I haven't done the arithmetic carefully, but given your remarks about what on core PCE over the next 2 years would constitute enough or moderate overshooting your definition, it does seem to be asymmetric, that you're not fully making up the past undershoots. Now, is this because I'm misunderstanding the timing and the measurement? Is this because just this is your opinion? How should we think about the credibility of the commitment to the sort of symmetric average aspect of flexible average inflation? Yeah, so let me be clear. I've given a number of remarks, including at Peterson, and what I've emphasized since we rolled out the framework is that flexible average inflation targeting is a regime that has an ex-ante aspiration for inflation to average 2% over time. We had extensive staff briefings, and we were concluded that for a variety of reasons, trying to make up for any particular backward calculation window of inflation is not really a robust strategy. So we put much more weight on forward-looking measures of inflation expectations. Really, all of this, Adam, is in service to keeping inflation expectations well anchored. And the concrete implementation of flexible average inflation targeting is really the rate guidance that we offered beginning in September of 2020. So we gave conditions for liftoff. We've essentially said that in order to help us achieve inflation that averages 2% over time, we want to delay liftoff till we've actually reached 2% inflation, so not in anticipation that we would. And also that when we're at least in the zip code of maximum employment, obviously we don't measure it precisely, but we want to have confidence that we're close to that. And we believe, based on analysis that the staff has done, including some excellent work by John Roberts and other staff have done, that a regime that delays liftoff till those conditions are met is a regime that at least ex ante can deliver inflation that averages 2% over time. So that's how I'm thinking about the framework, and that's how I'm thinking about the current set of circumstances. Great, but isn't there a risk that by not seeming to be sufficiently symmetric, you might be reinforcing some of these long-term low rate expectations? Or I mean, again, I'm not trying to belabor this, Rick, but we all know how difficult it was for Japan to try and fail to get out. Why are you confident this is enough given where rates are? Well, first of all, this is a regime that is going to be monitored subject to data, and I myself have really emphasized, for me, the reality check is closely monitoring wide range of measures of inflation expectations. The Fed staff has an excellent version of that. There are other ways to do it. I think that as a pragmatic and practical matter, Adam, you don't want to put all your eggs in either looking at models or surveys or markets. And so the nice thing about the Fed staff index is that it's essentially a common factor, principal components model. And so I take comfort that those indicators and others done by not just by the Fed staff show that inflation expectations. I think other countries got into problems because they did not begin to address potentially that risk until inflation expectations had already drifted down, and we're not in that situation now. And so I think that's one big difference, perhaps, with the approach taken in other jurisdictions. Thank you.
A key word in your speech and many discussions recently in the chair's recent remarks to Congress is transitory, as in transitory inflation or transitory shocks. Now, transitory is different from overshooting. Overshooting can be accidental or intentional. Yeah. How should we think about the transitory nature of inflation? Let me be a little more specific. How are you discerning, you and the Fed staff, discerning what constitutes transitory and what doesn't? I mean, is it fair to say that given the nature of the supply shock, the unprecedented nature of the recovery you spoke about, that we can't discern what's transitory and what's not, or is that too defeatist? I think that's too defeatist. I think doing so with econometric precision is difficult, but I do think that it's useful to put price increases into perhaps two, maybe three different categories. You know, one of these are what I would call the round trip rebound effects. So hotel rooms decline by 20%. This year, they go up by 25%. Over the entire 16 months since COVID, not much of a change. So there are a lot of sectors that have done a lot of round trips. That's why in my remarks, I referred to inflation since February of 2020. The nice thing about doing that calculation is that you don't have to get into a position of which item you're throwing out of the calculation. You look at everything, but you just set the base year before the pandemic. And if you do that, then on the PCE index, then inflation on a PCE basis since February of 2020, I think in my remarks I said it's 2.7. It's somewhat higher on CPI. I think the other category that you want to look at, Adam, is the reality that last year not only did the U.S. but the global economy shut down, and this year not only the U.S. but the global economy is opening up. So that opening up is putting pressure, especially in commodity markets and in a lot of tradable intermediate inputs. And as those relative prices are adjusting up, it's showing up as inflation. But there's no reason to think that those relative price changes are going to go on indefinitely. So that's another category. What I would put is global reopening pressure on commodities. The third category is probably the most important and the one that right now I have the most uncertainty about, and that's the state of the labor market. So if you look at unemployment or you look at the shortfall in participation, then this looks like a labor market in 2012 or 2013. If you look at vacancies, if you look at quits, if you look at reservation wages, this looks much more like a labor market like 2017 or 2018. And that obviously makes a big difference for how you think about the economy. I've said very many times, I'll say it again, I think we're going to know more about the labor market over the next several months than we do right now. I think there are some factors that plausibly are holding back effective labor supply, whether or not that is childcare responsibilities for children who were doing remote learning, whether or not it's concern about the virus in contact intensive sectors, vaccination, and obviously unemployment benefits. Supplemental unemployment benefits are also expiring in the fall. So I and many of my colleagues have indicated that in that third category, we're going to learn a lot more about the labor market. My baseline view, again, always baseline and risk, but my baseline view is that we'll begin to see in the fall some pretty healthy increases in effective labor supply and employment gains. And that's certainly in line with outside forecasters as well. But there is a risk to that outlook, and there's a downside risk to that outlook, and we and my colleagues would have to study that very carefully if that plays out. So that's how I'm thinking. That's how I'm thinking about it. Great. Let's, if we could, stay on the labor market for a bit. Yeah. I mean, as the new framework, I think, in my view, rightly has put more emphasis on that set of labor market indicators and more emphasis, frankly, on the welfare benefits of full employment. And I, for one, am a very big fan of the Fed having done that. But just going back to your speech, I guess because it's what's in the SEP, you mentioned your own modal forecast, or the modal forecast, median modal of the employment forecast for 2022 and 2023, and you have a very benign forecast of a very slow decrease in the mid threes over 2022 and 2023.
What are you thinking about in terms of labor force participation to go with that unemployment outcome? And how much is labor force participation getting back to or above pre-pandemic levels important versus a narrow unemployment measure? Yeah, excellent question. And actually, I think there are two parts, so I will answer both. We have said in our statement with unanimous support, I'm very proud that we were able to achieve that a year ago in our new framework, that we recognize that maximum employment is a broad-based and inclusive goal. So let me say what that means to me. What it means to me is that the historical record has shown, going back decades, that when the labor market improves, the gains across society are uneven. And typically it's only in what macroeconomists call the mid or late cycles of past recoveries that you begin to get broad-based gains in terms of participation, employment, wage gains at the lower end of the wage distribution. So we realize as policymakers how important it is to get to a low unemployment rate, one consistent with price stability, as fast as we can and keep the economy there. One thing I mentioned in the speech is Gold price continue to face pressure. The US dollar index in stagflation risk is plus $4 for gold, and gold daily chart, gold technical analysis, gold trend, gold price and chart. So हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गोल्ड प्राइस कंटिन्यूज टू फेस प्रेशर. So gold is starting out of the week on the back foot. Gold bulls are under pressure near daily support. Inflation concerns are keeping the US dollar underpinned on the Fed expectations. Gold prices continue to face pressure near the higher levels and trades in a broader range of 1750 to 1770 for the past week. तो हम लोग लास्ट कुछ वीक से देखने को मिल रहा है कि 1750 से 1770 तक के लेवल्स ही देखने को मिल रहे हैं. मार्केट इसी के बीच में रेंज बाउंड होती हुई देखने को मिल रही है. बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस बिल्कुल भी नहीं है. वहीं पे ही कहीं ना कहीं आसपास मूव देखने को मिल रहा है. आज भी 70 तक का 69 तक का हाई बनाते हुए दिखा और वापस से करेक्शन दिखाते हुए 50 तक 60 तक के लेवल देखने को मिल रहे हैं वापस से. ये ट्रेंड हम लोग को टूटने का तब दिखेगा जब हम लोग को देखने को मिलेगा ये टेपरिंग के रिजल्ट्स और उसके बाद ही हम लोग को मूव देखने को मिलेगा एग्जैक्ट. The US dollar index, so multiple factors contributed to the downside movement in the precious metal, which included a steady US dollar, higher US Treasury bond yield, and weekly equity gains. The US dollar index, which tracks the buck's performance against its six major rivals, stays strong near 94.10 with the mild losses. The US dollar index, so देख सकते हैं higher USD valuation makes gold expensive for the other currency holders. The US benchmark 10-year yield jumped to 1.61% as investors remain concerned over persistently high inflation
and expectations of early Fed tapering as soon as November despite disappointing NFP data. Gold on the back foot. So, however, the recent pullback in the equities points at risk aversion among investors, which provided support to the precious metal at lower levels. It is worth noting that S&P futures is trading at $4,367.50, down 0.33% for the day. तो हम लोग देख रहे हैं कि S&P फ्यूचर हम लोग को देखने को मिल रहा था 0.33% से डाउन होते हुए 4,367 पे मूव करते हुए देखने को मिला. The price of gold on Monday is in Asia has started out on the back foot as the greenback pops into bullish territory as measured by the DXY or against a basket of rival major currencies. At the time of writing, XAU-USD is trading at 1751.29 and down some 0.3%, falling from a high of 1758.40. तो हम लोग देख रहे हैं जिस टाइम पे ये नोट डाउन किया गया था हम लोग का डेटा उस टाइम पे 1751.29 के रिजल्ट्स बनते हुए दिख रहे थे गोल्ड के और डाउन होते हुए दिखा था 0.3% से क्योंकि 1758 तक का हाई बनाया हुआ था. यूएस डॉलर के बारे में बात कर ले सो द लेबर डिपार्टमेंट सेड इन its employment report on Friday that non-farm payrolls increased by 1,94,000 jobs last month. Economists polled by Reuters had forecast payrolls increasing by 5 lakh jobs. The US dollar was largely unmoved by a disappointing US employment report on Friday. Investors were of the opinion that the lackluster numbers may not sway the Federal Reserve from starting a tapering of its asset purchases as early as November. Inflation pressures are still expected to persist, so the data implies that the winter period could be slower in terms of growth, but inflation pressures are still expected to persist. This means that despite a potential slowdown, the Federal Reserve will be looking to start the process of reducing its monthly bond purchases as the November 2-3 policy meetings. The job report came in well below expectations. तो हम लोग देख रहे हैं जॉब रिपोर्ट जो हम लोग को देखने को मिली बिलो एक्सपेक्टेशन देखने को मिली लेकिन उसके बाद भी गोल्ड हमारा अपसर्ज करते हुए ज्यादा नहीं देखने को मिला. इसके मूवमेंट को पूरी तरीके से इग्नोर किया गया है. Questioning the timing of a well telegraphed November taper as well as easing some atheism about the Fed hikes in 2022. Stagflation risk is a positive point for the gold. While the taper is foregone conclusion, there could be some short covering following aggressive flows associated with the pricing of a November Fed exit. Looking beyond Fed pricing, high wages and no rise in participation rate will keep the stagflation theme alive, and gold could be an ideal hedge against their rising stagflationary winds. For another angle, the analysts also take in the global energy crisis, which has been intensifying.
The analyst at TDS explained that this is impacting the production of goods across the world and supply chains across Europe and Asia. So reasons to owe the yellow metal are growing more compelling. Indeed, as these issues fuel concerns of slowing demand and rising inflation, prices actions across rates in recent trading sessions suggest that global macro is just starting to price in implications of the energy crisis. After all, the post-Fed move higher in the rates was led by real estates, whereas it is now being led by break-evens, suggesting that the market is pricing a higher inflation due to the spike in energy, but acknowledging that this is a supply shock which impacts growth negatively. In turn, with positioning in yellow metal increasingly short, including CTAs, potential strength in gold due to this growing stagflationary narrative could spark aggressive short covering on the horizon. गोल्ड के डेली चार्ट देखेंगे तो टारगेट एरिया हमारी 1790 तक के है और अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस हम लोग को 20 तक का देखने को मिला है 1720 तक का अगर इसको ब्रेक करता है तो एक बार प्राइसेस हम लोग को करेक्ट होते हुए देखने को मिल सकते हैं और एल्स हम लोग को 1790 तक के लेवल्स जल्दी रेडार पे देखने को मिल सकते हैं सो एक बार आ जाते हैं अपने MT4 टर्मिनल पे क्योंकि इस कैंडल की क्लोजिंग का टाइम है देख सकते हैं मार्केट पूरी स्टेबल होती हुई दिख रही है ओके इस कैंडल का भी दिख रहा है मूव तो 1760.2624 के लेवल्स पे फिलहाल मूव करते हुए एक स्लाइड क्रीम कैंडल बनाती हुई दिख रही है यानी कि बुलिश प्रेशर बिल्कुल ही खत्म होते हुए दिख रहे हैं बेयरिश प्रेशर की ओर प्राइसेस जाते हुए वापस से 1760.5662 के लेवल्स पे 1760.5657 के लेवल्स 1760.4951 एक मिनट बाद इस कैंडल की क्लोजिंग का टाइम देखेंगे नेक्स्ट कैंडल के मूवमेंट किस डायरेक्शन में है सेवनटीन 60.5552 के लेवल्स ओके सो एक दूसरी कैंडल फॉर्मेशन देख सकते हैं थोड़ी सी करेक्शन के साथ 1760.0209 और 1759 तक के लेवल्स बनाते हुए
देख सकते हैं 59 के लेवल्स लगाने के बाद वापस से एक थोड़ी सी शॉर्ट ग्रीन कैंडल 1760.6667 के लेवल्स। ओके सो हम लोग मूव करते हैं अपने डिस्कशन पॉइंट की ओर और हम लोग डिस्कस कर रहे थे गोल्ड की चार्ट। सो गोल्ड 200 डेज मूविंग एवरेज की बात करते हैं। सो गिवन द डेली बुलिश क्लोज एट सपोर्ट एंड द विक, the expectations are for it to be filed by the price action in the next few sessions. The target area for gold is based on the minus 272% Fibonacci retracement of 50% mean reversal and corrective range. This comes in at 1790 with the confluence of the prior structure and en route to gold's 200 days moving average. टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस में 5 दिन की मूविंग एवरेज 1758, 20 डेज की 1759, 50 डेज की 1778, 100 डेज की 1802 एंड 200 डेज 1797 एंड ईयर टू डेट 1797.93 के लेवल्स। सो गोल्ड का ट्रेंड देखते हैं तो ट्रेंड जिस तरीके से बनते हुए दिख रहा है, एक कंसोलिडेशन बनती हुई दिख रही है और उम्मीद है कि एक बार कंसोलिडेट करते हुए वापस से करेक्शन भी देखने को मिल सकती है हमें। गोल्ड स्पॉट स्पॉट प्राइस जब हम लोग को न्यूज ये देखने को मिली थी 1758 तक के लेवल्स बनते हुए दिखे थे। सो वापस एक बार हम लोग मूव करते हैं MT4 टर्मिनल की ओर तो 1760.7371 के लेवल्स बनाते हुए गोल्ड के प्राइसेस फिलहाल मूव करते हुए। आ जाते हैं हम लोग डिस्कशन पॉइंट अपने गोल्ड न्यूज reuters.com पे एक बार। सो गोल्ड न्यूज reuters.com में देख सकते हैं प्रीशियस गोल्ड गेन्स एज इन्फ्लेशन कंसर्न ग्रो। So prolonged stagflation can push gold higher, analyst. US CPI Fed minutes due on Wednesday. Dollar pulling at gold heels. Gold price on Tuesday were set for the higher one-day gain since late September, as rising inflation fears cut risk appetite and boosted demand for the safe haven metal. Spot gold rose. Spot gold rose. Just a minute. 0.8% to $1768.06 per ounce by 10:05 a.m. EDT, while US gold future was up 0.7% to $1768.30. A global energy crunch has threatened the economic outlook and find inflation fears driving some investors towards safe haven assets. We are under stone of support coming from the general idea that inflationary pressures are going to be enough to hold gold up in the minds of the environment, where we see the Federal Reserve slowly moving more towards the reducing asset purchases.
तो हम लोग जिस तरीके से न्यूज़ेस का मूव देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट में हम लोग को जो देखने को मिल रहा है, फेडरल रिजर्व स्लोली मूविंग टुवर्ड्स रिड्यूसिंग एसेट परचेसेस। तो एसेट परचेस अगर हम लोग को रिड्यूस होते हुए दिखेंगे तो हमारा गोल्ड एक बार अपसाइड स्पाइक करता हुआ देखने को मिल सकता है। बट ओवरऑल द डॉलर इज पुलिंग एट द हील्स ऑफ द गोल्ड मार्केट एंड लिमिटिंग इट्स अपसाइड। तो हम लोग देख रहे हैं गोल्ड डॉलर जो है हमारा वापस से पुल करते हुए देखने को मिल रहा है, एंड जिसकी वजह से गोल्ड हमारा वापस से करेक्शन की ओर आते हुए दिख रहा है डेली बेसिस पे। गोल्ड इज ट्रेडिशनली सीन एज द इन्फ्लेशन हेज। तो हम लोग जानते हैं कि गोल्ड हमारा इन्फ्लेशन हेज की तरह काम करता है, और हमेशा जब भी हम लोग को इन्फ्लेशन बढ़ते हुए देखने को मिलता है उस टाइम पे हमारा गोल्ड करेक्ट करते हुए, और वाइस वर्सा जब इन्फ्लेशन हम लोग को कम होते हुए दिखते हैं तो गोल्ड एक बार रॉक करते हुए देखने को मिलता है। आई होप आप लोग को आवाज क्लियर आ रही होगी। अगर आप लोग को आवाज क्लियर आ रही है काइंडली प्रेस 36 इन द चैट बॉक्स। इफ माई वॉइस इज क्लियर काइंडली प्रेस 40 ताकि हम लोग आगे सेशन अपना कंटिन्यू कर सकें। Okay, so we see a global energy crunch has threatened the economic outlook and fanned inflation fears, driving some investors towards safe haven asset. We see undertone of support coming from the general idea that inflationary pressures are going to be enough to hold gold up in minds of the environment, where we see the Federal Reserve slowly moving towards the reducing asset purchases. But overall, the dollar is pulling at the heels of the gold market and limiting its upside. Gold is traditionally seen as the inflation hedge, जैसे कि हम लोग जानते ही हैं. However, reduced central bank stimulus and interest rate hikes tend to be push government bond yields up, translating into a higher opportunity cost for holding gold that pays no interest. There is more risk aversion in the market, and gold is benefiting from that, coupled with concerns about inflation and cooling of the global economy. If stagflation talks come to the force increasingly, gold could clock 1900 by year end, as interest rates should remain relatively low even if the Fed start tapering. तो हम लोग देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट अगर हम लोग को लो होते हुए दिखे तो एक बार गोल्ड हमारा 1900 तक के लेवल्स पे टच कर सकता है ईयर एंड तक. Focus is on minutes of the Fed's September 21 to 22 policy meeting and the consumer price index, both are due on the Wednesday. तो हम लोग देख रहे हैं 21 और 22 सितंबर को जो हम लोग को देखने को मिला था रिजल्ट, और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि वेनसडे को जो अभी डेटाज आने वाले हैं, यानी कि कल हमारे डेटा, अभी हम लोग फॉरेक्स फैक्ट्री कैलेंडर पे उसको भी डिस्कस करेंगे, उनका इम्पैक्ट पड़ने वाला है. Spot silver rose 0.6% to $22.68 per ounce, and platinum was 0.7% higher at $1015.44. Palladium, however, fell 1.6% to $2077.82. So जैसे कि हम लोगों ने कहा, एक बार हम लोग फॉरेक्स फैक्ट्री डेटा पे आ जाते हैं और एक बार रिफ्रेश करेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री कैलेंडर को. ओके, सो हम लोग को फॉरेक्स क्लैरिडा की स्पीक देखने को मिली है, उसका इम्पैक्ट एक बार देख लेते हैं. So Clarida, there is a flavor of stagflation right now. So FOMC minutes and tapering plan. So after the unexpectedly disappointing results in the job creation reported on Friday,
तो हम लोग देख रहे हैं फ्राइडे को जो हम लोग को जॉब्स के रिजल्ट देखने को मिले एक्सपेक्टेशन से कम देखने को मिले. There is a lot more interest in FOMC minutes released tomorrow. What the make market look like at now is when the taper will happen. So after the last meeting, the Fed said that they would start tapering soon, but didn't give a definitive date. तो हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट न्यूज में हम लोग को देखने को मिला कि टेपरिंग होते हुए दिखेगी, बट क्लियर डेट अभी भी हम लोग को नहीं पता है. The fact that is most likely going to affect bond yields now is when they actually reduce their asset purchases. In turn, would affect how the dollar performs against other currencies and even the stock market. तो हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग को एक्चुअली पता चलेगा कि एसेट परचेसेस को रिड्यूस किया जा रहा है या नहीं, तो उस बेसिस पर हम लोग देखेंगे कि डॉलर का मूवमेंट कैसा है और उसके अगेंस्ट करेंसीज का, और उसके साथ साथ स्टॉक मार्केट का मूव कैसा देखने को मिल रहा है. So what are the clues? Analysts hope to be able to own in on a date based on the reasons that different members give the supporting that start of the taper. Essentially, this gives us the criteria that the Fed is using to decide when to change their policy. Then we can compare that to data as comes in. The big issue is likely to be expectations around employment, given the Fed's dual mandate and we have seen in employment so far. The current consensus is that the Fed will start tapering after November meeting. तो हम लोग उम्मीद यही कर रहे हैं कि फेड स्टार्ट करेगी टेपरिंग अपने नवंबर की मीटिंग के बाद. दिस इज बेस्ड ऑन द assumption that the Fed would let the market know the taper is coming 2 months in advance and November is 2 months after the announcement. What would change? So the issue with the NFP data was that it's generally touched as good news by officials since the unemployment rate dropped by 1 decimal. On the other hand, the number of jobs created was below even the most pessimistic outlooks. So we want to see whether the Fed cares more about the unemployment rate or raw jobs creation numbers. In the previous instances, FOMC members have said that the Fed cares more about the employment to population ratio more so than in either NFP or the official unemployment rate. The unemployment population ratio was at 58.6% the last time the Fed started their taper following the 2008 crisis. Now it's back to 58.7% and it has been climbing steadily since the COVID recession officially ended. So what kind of reaction we can expect? So that is the thing, that is it's unlikely that anything in the minutes will move forward expectation for when the Fed will start its taper. November is already the earliest estimate, therefore it is hard for the market to take a more hawkish understanding of the minutes than they currently do, at least regarding the taper. So what might spook investors in is any mention about raising rates sooner than expected. The current prediction for the taper is to end the second quarter of the next year, and the Fed will be raising rates for the first time in the third quarter. The market could interpret a potential hint that rate could rise before that then as hawkish. For example, if there is a commodity about how it wasn't necessary to finish the taper before raising interest rate. आ जाते हैं MT4 टर्मिनल पे, तो देख सकते हैं 1760s के लेवल्स पे प्राइसेस मूव करते हुए फिलहाल, और पूरी तरीके से स्टेबिलिटी बनाई हुई है इस कैंडल की क्लोजिंग का टाइम. सॉरी. देख सकते हैं एक दूसरी कैंडल फॉर्मेशन के साथ 1760.2 के लेवल्स पे पूरी तरीके से स्टेबिलिटी के साथ प्राइसेस मूव करते हुए.
देख सकते हैं पूरी स्टेबिलिटी, मार्केट अब अपने मिड बैंड के आसपास, बोलेंगर बैंड के मिड बैंड के आसपास ट्रेस करती हुई दिख रही है और 60s के लेवल को मेंटेन की हुई है। ऑल्दो हम लोग को क्लैरिडा पीक देखने को मिला था, बट उसके बाद भी हम लोग को देखने को मिला कि 1760 के ही लेवल्स मेंटेन करती हुई जा रही है। 1760.1214 के लेवल्स। वन मिनट कैंडल का फॉर्मेशन देखते हैं तो वन मिनट कैंडल एक स्पाइक के बाद वापस से अब थोड़े से करेक्शन के साथ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग वन डे कैंडल की बात करते हैं तो वन डे कैंडल पूरी तरीके से एक बुलिश सिग्नल ऑल्दो अभी तक बनाई हुई है कि मार्केट एक बार अपसाइड ट्रेस कर सकती है, बट वी आर मूविंग फर्दर टुवर्ड्स दी investing.com और हम लोग उस पर एक बार अच्छे से देखेंगे कि गोल्ड का मूव आगे का कैसा हो सकता है। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स investing.com लाइव चार्ट्स। और इसमें हम लोग देखेंगे कि XAU USD हमारे गोल्ड का आगे का मूव कैसा रहेगा। जस्ट सेकेंड होल्ड ऑन, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं XAU USD को। सो हमारा XAU USD पेयर, ओके, सो हम लोग देख रहे हैं वन डे बेसिस का डेटा, और वन डे डेटा हम लोग अगर देखें, ओके, सो हम लोग जो ट्रेंड लाइन फॉर्म करना चाह रहे हैं, ये देख सकते हैं एक बार ये वाली ट्रेंड लाइन, इसमें हम लोग इस लेवल को इस लेवल से टच करते हुए दिख रहे हैं। सो देख सकते हैं ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड बना हुआ है जिसमें मार्केट अपने हाईज को ब्रेक नहीं कर पा रही थी। पहला हाई इसने बनाया 1834 का, उसके बाद 1808 तक का, और नेक्स्ट हाई अपना बनाया 1788 के आसपास का, राइट। और अभी जो मार्केट मूव करती हुई दिख रही है एक वापस से डाउन सिग्नल बनाती हुई, लेकिन थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया और उसने 1781 तक का हाई बनाया, अभी हम लोग को प्रीवियस सेशन में देखने को मिला। बट स्टिल एक तेजी के बाद भी क्या हुआ कि मार्केट वापस से करेक्ट करती हुई उस लेवल को टच नहीं कर पाई है, तो अभी तक उस ट्रेंड को ब्रेक नहीं कर पाई है और अभी कंसोलिडेट करती हुई दिख रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कंसोलिडेशन का फेज है। हम लोग ब्रश के थ्रू एक बार एलिप्स ड्रॉ करते हैं और दिस वन इज द कंसोलिडेशन फेज। कंसोलिडेशन फेज हमारा वो होता है जहाँ पे मार्केट एक बार सेम लेवल्स पे मूव करती हुई दिखती है, तो इसके बाद या तो एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आते हुए दिखता है या तो ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। सो मार्केट का ट्रेंड अब क्या हो सकता है, या तो जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक के लेवल बनाती हुई दिखेगी, द सेम लेवल जहाँ से ये कंसोलिडेशन स्टार्ट की 1834 तक के लेवल्स, और या तो फिर ये लेवल जो है हम लोग का दिस वुड बी द लेवल, ये हम लोग का लेवल यहाँ तक आ सकता है। ये हम लोग कैसे जज कर रहे हैं तो देख सकते हैं 1670 तक के लेवल्स। हाउ कैन वी जज इट, तो हम लोग देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने ये लाइन हम लोग की यहाँ से उठाई और यहाँ पे लाके लगा दी। सो रीजन ये था कि मार्केट जितने ऊपर से नीचे आई है, अगर कंसोलिडेशन फेज बनाती है तो वो उतना ही नीचे और जाएगी, और अगर उतना नीचे जाती है तो ये 1673 1670 तक के टारगेट्स दे सकती है हमें। तो मार्केट में इस टाइम पे दोनों तरीके के मूव देखने को मिल सकते हैं, एक बार ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, लेकिन हम लोग एक बार पॉसिबिलिटी जज करते हैं कि व्हाट कुड बी द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जिसमें कि मार्केट हम लोग को मूव करते हुए देखने को मिल सकता है। तो हम लोग रिमूव करते हैं अपने लाइंस को और एक बार आ जाते हैं अपने इंडिकेटर स्टोकेस्टिक पे। ओके, सो स्टोकेस्टिक का मूव देखें तो 65 58 56 के लेवल्स पे देखने को मिल रहा है, और सॉरी, अभी जिस तरीके से मूव है डिपेंड करेगा कि क्लोजिंग कैसी देती है। अगर 1760 के ऊपर क्लोजिंग दे जाता है तो हम लोग कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट एक बार अपसाइड जाते हुए दिखेगा, लेकिन अगर 1760 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है सो अगेन मार्केट में करेक्शन आती हुई देखने को मिल सकती है। ओवर ऑल्दो एक बार ओवरसोल्ड की कंडीशन नहीं आई है, सॉरी इट्स नॉट ओवर बॉट कंडीशन कि मार्केट यहाँ से करेक्ट कर जाए, मार्केट को यहाँ पे जाके कहीं ना कहीं करेक्ट करना चाहिए, लेकिन पॉसिबिलिटीज आर ऑलवेज देयर कि यहाँ से भी करेक्ट कर सकती है, बिकॉज बहुत बहुत ही बार हम लोग देखे जा रहे हैं करेक्शन का माहौल है।
लाइन चार्ट अगर हम लोग ड्रॉ करें तो देख सकते हैं लाइन चार्ट में एक डब्ल्यू पैटर्न भी कहीं ना कहीं फॉर्म कर रही है मार्केट, लेकिन स्लाइड डब्ल्यू पैटर्न, तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। कैंडल चार्ट पे आ जाते हैं तो पूरी तरीके से कंसोलिडेशन, और एक बार हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो देख सकते हैं एक बार सपोर्ट हमारा 1745 का है। 1745 तोड़ी तो हमारे लिए जो सपोर्ट लाइन होगी वो होगी 1720। ओके, दिस वुड बी द सपोर्ट लाइन। अगर इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करती है 1720 के लेवल्स को, तो गोल्ड का नीचे जाना पूरी तरीके से कंफर्म है। 1760s के लेवल पे अभी मूव करते हुए देखने को मिल रहा है, और लेवल्स जो हम लोग को डाउन के देखने को मिल रहे हैं 45 और 21 के, और अगर इसको तोड़ता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा दैट वुड बी 1686 इटसेल्फ। अभी जो हम लोग पैटर्न देख रहे हैं, एक ध्यान से देखो तो एक फ्लैग पैटर्न भी देखने को मिल रहा है कि थोड़े से अपसाइड और वापस से कंसोलिडेशन, बट इट कुड बी द नेगेटिव फ्लैग आल्सो, दैट इज बेयरिश फ्लैग आल्सो, क्योंकि उतने सही से फ्लैग फॉर्मेशन भी नहीं दे रहा है। फ्लैग फॉर्मेशन इज समथिंग कि प्राइसेस डाउन से एक बार अप जाते हैं और अप जाके कंसोलिडेट करते हैं। हम लोग इसका लाइव एग्जांपल देखते हैं कहीं पे, जस्ट अ सेकेंड। हम लोग बुलिश फ्लैग का मूव ढूंढ रहे हैं, बुलिश फ्लैग का फॉर्मेशन। ओके, सो इट्स द बुलिश फ्लैग, क्योंकि इसमें हम लोग देख सकते हैं कि एक बार मार्केट ने डाउन से अपसाइड का मूव दिया। ओके, एंड देन उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, यहाँ तक। कंफ्यूजन, ओके, यहाँ से मार्केट ने मूव करना स्टार्ट किया था। हॉरिजॉन्टल लाइन हम लेंगे यहाँ से यहाँ तक का। इट्स नॉट वर्किंग ट्रूली। ओके, सो हम लोग देख रहे हैं ये लेवल, यहाँ से यहाँ तक का जो लेवल था, मार्केट ने पूरी तरीके से कंसोलिडेट किया। ये वाला लेवल हमारा, ठीक है। हाँ, अब क्लियर हो रहा है। लाइक मार्केट ने एक बार ऐसे तेजी दिखाई और उसके बाद वहीं पे कंसोलिडेट करती रह गई उसी लेवल्स के बीच में, बहुत दिन तक ऐसे ही कंसोलिडेशन देखने को मिला। लाइक ये लेवल था हमारा 14 अप्रैल 2020 का, और ये लेवल रहा हमारा 11 जून। ओके, सो अप्रैल से जून तक मार्केट इसी ही बीच में रही। हम लोग के जो लेवल्स थे वो थे 1766 और 1669 के बीच में मूव करती हुई दिखी, लेकिन यहाँ से एक ब्रेकआउट आते हुए दिखा और मार्केट ने 1900 तक का लेवल दिखाया। ये हमारा बुलिश फ्लैग था, क्योंकि इसमें मार्केट ने पहले एक डाउन साइड से मोमेंट अपसाइड का दिखाया और उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद पूरी तरीके से राइज करते हुए दिखी। अभी हम लोग जो करंट मूव देख रहे हैं, करंट मूव उतना सही से बुलिश सिग्नल नहीं दिया है। अगर ये डाउन साइड से बुलिश सिग्नल देके कंसोलिडेशन देखता तो हम लोग पूरी तरीके से उम्मीद कर सकते थे कि अपसाइड देखेगा, लेकिन जिस तरीके से मार्केट का मूवमेंट डाउन 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 आता जा रहा है, अगर 45 का लेवल तोड़ देता है तो पूरी तरीके से 20 तक के लेवल्स के लिए मार्केट रेडी, और 20 का लेवल टूटते ही 1686 तक के लेवल्स। ये हमारी मार्केट के रेडार पे। एक बार हम लोग इसको भी डिलीट कर लेते हैं और हम लोग यूज करते हैं अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ओके, सो थोड़ा सा चार्ट को मिनिमाइज कर लेंगे और हम लोग यूज करेंगे अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये देखने के लिए कि व्हाट कुड बी द लेवल्स फॉर द मार्केट। 1900 पे जाने से पहले मार्केट को क्या क्या देखना पड़ेगा। सो देख सकते हैं कि मार्केट के लिए फिबोनाची लेवल्स अगर हम लोग फॉर्म करें तो हमारे लिए सबसे पहला सपोर्ट जो होगा 1739 का एक सपोर्ट दिख रहा है। अभी मार्केट जो मूव करती हुई दिख रही है 1760 के आसपास, तो 73 एक अच्छा टारगेट होगा, और अगर 73 को पार कर जाती है तो नेक्स्ट टारगेट जो होगा 1803। ये एक लॉन्ग टर्म बेसिस की हम लोग बात कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे 1900 पे जाने के लिए मार्केट को ये सारे लेवल्स ब्रेक करने पड़ेंगे।
बट अगर हम लोग शॉर्ट टर्म पे जाते हैं 1833 तक के जाने के लिए, तो उसके लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, तो बेसिकली सबसे पहला लेवल है हमारा 1790, जो कि मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि 1720 एक बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा। उसके ऊपर 1740 एज आई हैव अर्लियर मेंशन, 1758 जो कि मार्केट डेली बनाती हुई दिख रही है, आज भी 5860 के आसपास अभी मूव करती हुई देखने को मिल रही है। और अप साइड में देख सकते हैं तो अप साइड में 1774 1775 एक हर्डल मार्केट के लिए, इसको ब्रेक करती है तो नेक्स्ट हर्डल वुड बी 1801, और तब जाके कहीं ना कहीं 1833 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो मार्केट के लिए भी मार्केट को ऊपर जाने के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना है, क्योंकि अभी 1760 के लेवल पे है, तो 1775 1801 और 1833, बट डाउन साइड जाने के लिए उसको बस 2 लेवल्स पार करने हैं, 1740 एंड 1720। ये पार करने के बाद वो तुरंत ही नीचे जाती चली जाएगी और बहुत करेक्शन दिखाती हुई मिल सकती है। बट एज वी सी कि फेस्ट सीजन्स आने वाले हैं, और हमारी पूरी मार्केट, स्टॉक मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो पूरी स्टॉक मार्केट हमारी अप पे चल रही है इस टाइम पे, लाइफ टाइम हाइस पे। तो अगर वो करेक्ट होती हुई दिख गई दिवाली के टाइम पे, तो हम लोग को गोल्ड शाइन करते हुए दिखेगा, और वाइस वर्सा पॉसिबल है कि इक्विटी मार्केट इस बार अप जाए और गोल्ड हमारा शाइन करते हुए ना दिखे। स्टिल हम लोग की दिवाली का टाइम है, फिर भी पॉसिबल है एक बार गोल्ड के माहौल में करेक्शन होते हुए दिखे और वहीं से खरीदारी होके गोल्ड एक बार अपसाइड जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये रहे हमारे कुछ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू हमारे मार्केट के एनालिसिस के लिए। कल के लिए मोमेंटम देखें तो कल के लिए मोमेंटम जहाँ तक लग रहा है अपसाइड ही देखने को मिल सकता है। डाउन साइड हम लोग को 1755 तक के टारगेट, और अपसाइड की बात करें तो 1775। गोल्ड बेसिकली दिन भर में हम लोग को $20 to $25 का मूव दे जाता है यूजुअली मार्केट में। तो कल के लिए 55 to 75 तक के टारगेट्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। एक बार मूव करते हैं MT4 टर्मिनल की ओर और देखते हैं गोल्ड के प्राइसेस। तो 15 मिनट कैंडल पे हम लोग जाते हैं तो देख सकते हैं लगातार 45 मिनट से हम लोग की कैंडल्स, ये देख सकते हैं लगातार 3 कैंडल 15-15 मिनट की। 45 मिनट से हम लोग की कैंडल्स जो है पूरी तरीके से स्टेबल होती है देखने को मिल रही है, और एक कंसोलिडेशन के साथ इस टाइम पे मार्केट में अपसाइड मूव नहीं देखने को मिलेगा। जो मूव देखने को मिलेगा वो करेक्शन का ही देखने को मिलेगा। तो उम्मीद कर सकते हैं 58 to 62 के बीच में कहीं ना कहीं क्लोजिंग की अब उम्मीद की जा सकती है। बाकी देखेंगे मार्केट का मूव कैसा है। अब आ जाते हैं हम लोग एक अपने डिस्कशन पॉइंट पे। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर डिस्कशन पॉइंट। So gold prices eye CPI as non-farm miss, rising wages complicate Fed outlook. So points to be covered today: gold fundamental forecast, that is bearish. Gold versus US dollar and 10-year treasury yield. Trading signal for gold. Gold down. Fed expected to begin asset tapering on schedule. XAU USD faces a wall of resistance around 1765. Gold price key levels to watch. Gold why so low? Technical outlook. सो फंडामेंटल फोरकास्ट की बात करते हैं तो गोल्ड प्राइजेस मार्क्ड टाइम दिस पास्ट वीक बट आउटलुक रिमेन बेयरिश। तो हम लोग देख रहे हैं कि गोल्ड ने इस बार तेजी दिखाई है, 1781 75 70 के डेटा आज पे दिखा दिए, बट अभी भी आउटलुक जो है वो बेयरिश ही देखने को मिल रहा है। नॉन फर्म पेरोल्स मिस सॉ हायर वेजेस विच मे बूस्ट इन्फ्लेशन। XAU USD eyeing US CPI data as Fed may start tapering in November। तो हम लोग देख रहे हैं कि फेड की जो टेपरिंग है वो हम लोग को कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट की जा रही कि नवंबर में देखने को मिल सकती है। एंटी फियाट गोल्ड price is traded relatively flat this past week, but the fundamental outlook for XAU USD remains tilted to the downside. Non-farm payrolls report. So at the end of the day, September's non-farm payrolls report probably does little to derail Federal Reserve tapering expectations. Investors are anticipating that the central bank to begin the process of November rate decision. While the world's largest economy only added the 194K jobs last month, तो हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट मंथ हम लोग को जॉब्स डेटा जो देखने को मिला ओनली 194,000 जॉब डेटा पब्लिश होते हुए दिखे।
देयर आर द साइंस दैट द लेबर मार्केट इज फेसिंग सप्लाई साइड इश्यूज। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये इश्यूज देखने को मिल रहा है कि डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है जॉब्स की, लेकिन सप्लाई साइड इश्यूज आते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए लास्ट वीक हम लोग को सिर्फ 194,000 जॉब डेटा ही पब्लिश होते हुए दिखे। The unemployment rate unexpectedly declined to 4.8% from 5 to 5.2%। तो एक्सपेक्टेशन हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट की 5.2% की थी, जो कि 4.8% से होती हुई दिखी। इकोनॉमिस्ट वर एंटिसिपेटिंग अ ड्रॉप ऑफ 5.1%। This might have been partially explained by the decline in the labor force and its participation rate to 61.6% from 61.7% prior। तो हम लोग देख रहे हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है 61.7% प्रीवियस था और अभी का 61.6% देखने को मिल रहा है। अल्टीमेटली दिस अपीयर्स टू बी complicating the Fed's outlook. Average hourly earnings continued rising, climbing 4.6% year to year versus 4.3% prior. Ultimately, this appears to be complicating the Fed's outlook. Average hourly earnings continued rising, climbing 4.6% year to year versus 4.3% prior. Softer than anticipated payrolls gain could slow the pace of economic recovery, but higher wages may continue boosting inflation. तो दोनों कंट्राडिक्ट करने वाली चीजें हैं कि सॉफ्टर देन एंटिसिपेटेड पेरोल गेन्स हम लोग को इकोनॉमिक रिकवरी में थोड़ा सा स्लो पेस दिखा सकता है, वेयर एज बात करें तो हायर वेजेस हमारे बोस्टिंग इन्फ्लेशन को अपसाइड करते हुए देखने को मिल सकते हैं। The latter might be what is keeping prospects of gold tapering intact. On the chart below, I have compared wages versus core inflation. In fact, the US will release the latest inflation figures this week, upcoming week. The headline and core rate are expected to clock in the 5.3% and 4.0% year on year, respectively, for September. Ongoing elevated readings above the Fed's target may keep the door open to the Fed loose policy underwinding. US एवरेज अर्ली अर्निंग्स वर्सेस कोर सीपीआई की डेटा हम लोग देख ले तो एवरेज अर्ली अर्निंग्स हम लोग देख सकते हैं पूरी तरीके से अप देखने को मिल रहा है और कोर सीपीआई जो है वो डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। Combination of rising treasury yields, so ultimately these forces may bode ill for the non-interest bearing yellow metal. A combination of rising US treasury yields and a stronger US dollar may keep pressuring gold prices, or at the very least cap on upside XAU USD per share potential. On the chart below, gold can be seen trending to the inversely follow bond yields and the direction of the US dollar of the late. गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर एंड 10 ईयर यूएस ट्रेजरी बिल्स, तो देख सकते हैं गोल्ड का मूव, गोल्ड हम लोग को यहाँ पे आते हुए दिख रहा है, जबकि 10 ईयर ट्रेजरी बिल्स देख सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अप जाते हुए देखने को मिल रहा है और यूएस डॉलर भी हमारे अप जाते हुए देखने को मिल रहा है इस साल के अकॉर्डिंग। ट्रेडिंग सिग्नल फॉर गोल्ड, तो देख सकते हैं गोल्ड का जो मूड है वो अभी भी डाउन का ही देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं जैसे कि हम लोगों ने ट्रेंड लाइन फॉर्म की हुई थी, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का मूव देखे तो पूरी तरीके से डाउन। Gold down, Fed expected to begin asset tapering on a schedule. So gold was down on Monday morning in Asia as the US Federal Reserve is expected to begin asset tapering as per its timeline despite disappointing data in the latest US job report. तो हम लोग देख रहे हैं मंडे को एशियन मार्केट में हम लोग को गोल्ड जो है पूरी तरीके से डिसअपॉइंटिंग होते हुए दिखा, क्योंकि जॉब रिपोर्ट जो थी वो अनएक्सपेक्टेड आती हुई दिखी। Gold futures at 0.14% to $1754.95 by 12:14 a.m. ET, with the yellow metal hitting a 2-week high on Friday after the release of the US job report, but then pairing gains during the session. तो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जब गोल्ड का मूव देखने को मिला था 2-week हाई 1781 के आसपास, उसके बाद तुरंत ही एशियन मार्केट में हम लोग को मूव देखने को मिला और प्राइसेस वापस से करेक्ट करते हुए सेम लेवल पे 54-55 पे आते हुए दिखे। गोल्ड डाउन, फेड एक्सपेक्टेड टू बिगिन एसेट टेपरिंग ऑन स्केड्यूल, सो डॉलर
which normally moves inversely to gold, inched up on Monday, and the benchmark US 10-year Treasury yields hits its highest level since early June 2021 on Friday. The US Labor Department's job report released that Friday showed that non-farm payrolls were at 1,94,000 and the unemployment rate was 4.8% in September. Although the non-farm payrolls figure was much lower than 5 lakh in the forecast prepared by investing.com, the Fed is widely expected to begin asset tapering in November 2021 as the number of COVID 19 cases in the country crested and began to decrease. Although the US job market will continue to feel COVID 19's impact, it is too soon to say it's stalling, San Francisco Fed President Merle Daly said on Sunday. SPDR Gold Trust holding edged down 0.2% to $985.05 tons on Friday from 986.54 tons on Thursday. Gold price rebound from critical 1750 amid mixed market sentiment. Rising energy cost, inflation lift gold's appeal, but firmer yields warrant caution. Gold on the back foot as the NFP fails to alter tape prospects. Gold is attempting another run higher on Monday despite the risk on the move and persistent strength in the US Treasury yield, which underpinned the greenback. Soaring energy prices combined with the rising inflation expectations continue to back the case for the Fed's monetary policy normalization, even though Friday's US non-farm payrolls disappointed. The renewed uptick in the gold could associate with higher inflation expectations as the bright metal in the seen as a hedge against inflation. Further, fresh US China spat over Taiwan and the phase 1 trade deal is helping put a floor under gold price. It's worth adding that the US market has closed in observance of कोलंबस डे एंड हम लोग देख सकते हैं कल की मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो कल कोलंबस डे की वजह से यूएस मार्केट क्लोज थी और जिसकी वजह से गोल्ड एक बार सस्टेन मूव करते हुए दिखा सेम लेवल्स के बीच में लाइट ट्रेडिंग कंडीशंस could exaggerate the moves in gold price. Gold's key level to watch. So, according to the technical confluence detector, gold is running into a dense cluster of healthy resistance levels around 1761, which is the convergence of Bollinger Band 1 day middle, SM5 1 day, and Fibonacci 38.2% 1 week. A firm break above that supply zone is needed to challenge the next significant upside barrier at $1765, where the Fibonacci 61.8% 1 day coincides with the Fibonacci 38.2% 1 month. Further up, the buyers will look out for the Fibonacci 61.8% 1 week at $1767, above which the Fibonacci 38.2% 1 day at 1771 will be the level to beat for gold bulls. On the flip side, gold bulls will find fierce support at 1754. The convergence of the SMA 54R Fibonacci 23.6% 1 week and the previous day's low. Acceptance below the latter could fall for a test of 1748 level, which is the Fibonacci 23.6% 1 month. The last line of difference for the gold bias is seen at $1746, the intersection of the previous week's low and pivot point 1 day S1. टेक्निकल आउटलुक की बात कर ले तो रेजिस्टेंस हम लोग को 1790 और उसके बाद 1800 का और सपोर्ट की बात कर ले तो 1720 और उसको ब्रेक करें तो 1686. सो हम आज का सेशन यही पे एंड करेंगे और बाकी की चीज़ें डिस्कस करेंगे कल के सेशन में और देखेंगे गोल्ड का मूव कैसा है, किस डायरेक्शन में चेंजेस देखने को मिले. सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड आई एम एंडिंग दिस सेशन राइट हियर राइट नाउ.